Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Varun. Good morning, Nilesh. Good morning, Pankaj. Thank you so much, Nilesh. No worries. Hit the like button, guys. निफ्टी का टारगेट हिट हो चुकी है कल का जो ट्रेड चल रहा था ब्यूटीफुली डन ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड we'll look for the next plan of actions in the moment. Yesterday got 3,500 points in BTC. Wonderful, beautiful, Pankaj. Good. Keep following the rules, be in the directions of the market, and keep printing the money. Okay. BTC का next plan of action is at 85,700 ना. तब तक के लिए मार्केट शॉर्ट में ही है, कंटिन्यूटी में देखेंगे. गोल्ड का टारगेट अभी तक हिट नहीं हुई है. Right, post completion of the target only next plan of actions will be taken under the consideration. Keep the charts clean. 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम. Hit the like button, guys. Pankaj, you're liking the stream? मूव्स रात को ही आता है. कल कुछ मूव आया ही नहीं. जहां पे हमारा एग्जीक्यूशन क्लोजर था ना वहां से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया ना पंकज. एग्जैक्टली इफ यू नोटिस. वन सेकेंड. Where did the market take the rejection from? From the same point of action, na? There was no change over here, right? So in this perspectives, what are the things that you have to look? रात को आए मूवमेंट एशियन सेशन में आए लंदन सेशन में आए प्रॉब्लम ही नहीं है. एक ही चीज फॉलो करना है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. रिजेक्शन उसी पॉइंट ऑफ एक्शन से लेगा. ओके. Keep the chart clean, guys. We'll start in 2 minutes. बैंक निफ्टी में या निफ्टी में तभी प्लान ऑफ एक्शन बनेगी जब नेक्स्ट अलोकेशन पॉइंट बिल्ड होते हुए दिखेगी. एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन क्लोजर ऑफ 23,743 एंड बैंक निफ्टी 51,6,968 मैथमेटिकल नंबर्स, राइट. कंटिन्यूअसली फोर्थ डे गैप अप ओपन हुआ तो किस तरफ ओपन हुआ? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही मार्केट्स ओपन हुए हैं, करेक्ट. ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके ओपन हुआ है नहीं. जब तक सेलिंग प्रेशर बिल्ड नहीं होगी मार्केट में द डायरेक्शन इज बुलिश. सेलिंग प्रेशर बिल्ड होने के बाद ही शॉर्ट की तरफ हम देखेंगे, उससे पहले नहीं. ठीक है. गुड मॉर्निंग सुमन. गुड मॉर्निंग सुमन. We'll start in 2 minutes. Keep the charts clean so that you guys will not be having a trouble and disturbance of previous. Let's start with daily time frame.
सो व्हाट आर द मेजर चीजेस, हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या देखना है? फर्स्ट, प्रीवियस डिमांड, रिट्रेसमेंट कितना लिया था, जितना हमारा प्रीवियस मोमेंट लिया था उतना ही हमको यहाँ पे रिजेक्शन मिली थी, उस रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी डिमांड, राइट? पोस्ट डिमांड कंप्लीशन, मार्केट टेंड टू टेक द रिजेक्शन फ्रॉम 150%, वो हमारा बाइंग स्पॉट अलोकेशन पॉइंट थी, राइट? इस हिसाब से मार्केट हैड कंटिन्यूड द मूवमेंट विद द मूवमेंट कंटिन्यूएशन। फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन हमारा कितना था? ये सप्लाई था, करेक्ट? जैसे ही हमारा ये हाई ब्रेक होके सस्टेन हुआ, what did we do? We started to take the entire moment of buying allocation, right? So this will be the first point of interest, that where market tend to move post the market continuation. The target allocation was 1, market continue किया, break करके continue किया. Now where is market taking rejection from? 150%, right? So is point of action में what are the next steps that you will be looking at? Nilesh, you weren't there today, so Varsha will share one link. Use that link. So in the calculations of the numbers, you won't be having difficulties. Okay. So post completion of this, what are the next steps that we'll be looking at? Market ने हमें first point of action में कितना मूवमेंट लिया था? जितना हमारा प्रीवियस डिमांड अलोकेशन है उतने का ही एट द करंट स्टेट ऑफ एक्शन में रिजेक्शन दिखने को मिल रही है, करेक्ट? अगर ब्रेक होके कंटिन्यू होती है देन द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शंस, एल्स नो. सो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कितना लिया मार्केट ने? जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई था, that got converted into the current demand plan of actions, right? With the current demand plan of actions, market continued the movement with the continuity. Let's look for the mathematical numbers. So this will act as a swing high, this will act as a swing low. With the continuation, what are the next steps that we will be looking? We will be doing the math on the same structures. So let's do the calculations into the sheets. So in this structure, my swing high is 2929.797. My swing low is 2833.032. My retracement point is 2880.752. Right? In this scenarios, what are the numbers that I have got? The formulative number is 96.765. My golden ratio of the current target is 30.3037.317. Post completion of that, what is my next step? The intermediate ratio. Intermediate ratio is at current stage of 3074.282. Right? This will be the action plan of the swing trades that will be looking in the coming stages. Right? Post the retracement completion, that will be our first target plan of actions which we'll be taking under the considerations. Right? Post taking under the considerations of daily time frame, हमें क्या करना है? 4 hours में आना है. 4 hours में market क्या structure follow करके गई थी? Following through the POI range. ये हमारा first demand plan of action है. With that plan of action, continuity of the movement, जितना ड्रॉप आउट मिला था उतने का ही कंटिन्यूएशन के साथ मूवमेंट अलोकेट हुई थी, right? And this was our one of the mathematical numbers. With that mathematical numbers, market continued the movement,
right? So post this, what are the next steps that you will be looking over here? The next steps that you will be looking over here is the supply allocation point. ये हमारा first point of action का supply था. On the continuity of the rejection. Rejection कौन सा? जो bearish movement का last retracement point जो supply थी, that will act as our current demand. So with that, market continued the movement. कंटिन्यूटी कहाँ तक आई थी? जितना रिजेक्शन कितना लिया मार्केट ने, जितना प्रीवियस डिमांड जनरेशन, उतना ही आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखने को मिली. कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस सप्लाई, राइट? जैसे ही प्रीवियस सप्लाई यहाँ पे कंटिन्यूटी में दिखने को मिली थी, what are the plan of actions that you will be looking? Allocating the point of interest. Market continue किया था. First step, you can look into the scenario of 150% rejection, जो कि हमें मिली थी यहाँ पे, right? What is the second step that you will be looking over here? On the allocation of the previous retracement point. In the scenario, first point of retracement was this. Let's calculate through that and check whether the market took the rejection from the same. मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके मार्केट कंटिन्यूटी में आई थी. कितना कंटिन्यूटी में आई थी? ऑन द 200% रेंज. दिस वाज योर सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो उतना हमारा मेजर रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन है, उतने का मूवमेंट, राइट? Measures that you will be looking, and will act as your coming. What do we know? Do we have a rejection from the same perspective over here? Yes, we do. What are the next steps that we will be looking over here? We will be looking for a rejection, जो कि हमारा previous point of action में जो कि ये वाला demand, this will act as your current retracement point. उसके साथ continuity में कौन सा देखोगे आप? Continuity में जितना inducement range में create हुआ है, not the previous. Previous कब होगा? जब हमारा inducement range का break देगा. So this was our inducement candle jitna movement, utna hi continuity, right? Post the break of the inducement creation, then only you will look for this supply allocation, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना. ये supply allocation तभी देखा जाएगा जब movement inducement का supply break करेगा, उससे पहले नहीं. Okay, with that continuity, market tend to come down in the scenario, as this will be your first demand action point, and let's do the math with the same, right? So what is the numbers saying over here? The numbers saying this is your swing high, this is your swing low, this is your retracement point. Let's mark and check whether the numbers are working in the same structures. So 3057.919 will be your swing high. The swing low is working as 3030.422, and your retracement point is working as 3047.451. Right? What is the formulative number that you have got? The formulative number you have got is 27.497. And what are the targets that we are having? Intermediate ratio is 2992 and our golden ratio is 3002. So let's mark and check whether do we have a proper action plan. 3002.96. Where did the market tend to take the rejection from? From the same point of actions in the scenario. So this was our plan of actions, and of the plan of actions, market is taking a retracement, right? So with this, what are the next steps that we'll be looking over here? Allocating of the demands. So this was my previous demand. With the previous demand, the first supply will be always your previous demand range, which will act as your current supply. Do we have the rejection? Yes, we do. Continuity, whatever the movement we are getting from the previous demand will be your current. With the current, we had a break and the continuity. With that plan of action, 150% will be the rejection point. Do we have a 150% rejection point over here? Yes, we do. With that, market tend to take a rejections in today's scenario. And if we notice, we are having a buying pressure in 4 hours. If the market gives an S2, S1 setup or S2
B2 setup, we will look for a plan of action towards the long, not prior to that. Okay, so these are the current swing trade scenarios that we'll be looking at. And if we mark out the level of intermediate ratio, which is 2992.457, what do we notice? Where exactly it is tend to be? It's still in our demand range, right? Post the closures, what are the next step? Coming down to 1 hour. So in today's Asian session, हमारा गोल्ड डायली टाइम फ्रेम क्या है? बुलिश है. 4 आवर्स टाइट 2.0 क्या है? बुलिश है. सो 1 आवर का स्ट्रक्चर क्या है? 1 आवर का स्ट्रक्चर एट द करेंट स्टेज इज इन द इंड्यूसमेंट रेंज. जब इंड्यूसमेंट रेंज में रहता है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू विल बी फॉलोइंग ओवर हियर? The steps that you will be following over here is in the scenarios of the previous, right? So previous structure plan ke hisab se, this was your demand. With the demand, there was a movement allocation. कितना movement allocate हुआ था यहाँ पे? जितना आपका previous supply थी, उतना ही allocation के साथ यहाँ पे continuity दिखा के market has tend to take a rejection, right? With the rejection perspectives, sorry. With the rejection perspectives, what did market tend to do? Market tend to break the structure. So in the structure wise, what will be your first plan of action? Whatever your previous demand is there, वो आपका first होगा. On the break will be your second. Right? यहाँ पे continuity में closure आई थी. Closure के साथ, what is the step? Market took the rejection from 150%. 150%, 2. Post rejections, what are the next steps that we'll be looking over here? Definitely, we had a movement, we had a circulating supply built. In this point of action, this entire circulating supply was taken under a go. कल के इवनिंग सेशन की शॉर्ट ट्रेड का रीजन उतना ही था, सिंपल एंड इजी. जहां जहां पे सर्कुलेटिंग सप्लाई बिल्ड होता है, वहां वहां पे ऑलवेज रिमेंबर द एंटायर मूवमेंट विल बी कैप्चर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:10, राइट? अगर एक इंसान बड़ा अमाउंट लगाता है, 10 रिटेलर्स का अकाउंट ब्लो होता है. Okay, in that spectrum of the movement, it is called the risk to reward of 1:10 eggshell theory. Okay, so वो 15 minutes में दिखाता हूँ why was that movement taken under the consideration, right? So what was your supply over here? This is your first supply plan of action. With that supply plan of action, market tend to break and continue. How much did the market tend to move from the plan of action? जितना हमारा previous supply है, उसके ऊपर market ने movement नहीं दी. Correct? So what are the next steps that you will be looking over here? The next step you will be looking, what was the setup build? S2 B1 setup के साथ market ने नीचे के लिए continue किया. Right? What will be the first movement plan of action? Always remember the first movement plan of action will be your previous. In this scenario, this is my previous demand. So this will be my first plan of action, which will act over here on the break and the continuity. Right? So this is my first continuation में market थी. जैसे ही market continuation में build हुआ, so what did market do? Market took a rejection from 200%. Sorry. Market took the rejection from 200%. Right? What are the next steps that you will be looking? Why did the market tend to move towards the long? Market ऊपर क्यों जा रहा है at the current stage? Right? Keeping in mind this is just 130 pips which is running. 130 pips maybe there is a plan of action, right? हमें at first point S1 B1 setup create होते हुए दिखी, buying pressure दिखने को मिली. उसके साथ market ने एक छोटा सा rejection के साथ सब लोगों को short में बिठाया and market continued the movement. Right? In this structures, what are the first steps that you will be looking? Will you be taking with the wick or without the wick? Batao. You guys will be taking without the wick because there is no break yet. Once there is a break, then only with the wick, else without the wick. So this will be your current supply, what will act as, and where does market tend to show the movement? It's still in the same zone of action.
And what is the retracement you can identify? The retracement over here is identified as per the previous supply. This was your previous supply. Change of structure, जो supply है वो act करेगा आपका demand के through. How much did the market tend to take the rejection? जितना हमें चाहिए उतना ही rejection लेके market आज के दिन में long के तरफ continuity में है, right? And यहाँ पे अगर structure देखोगे, why did this fall come at first place? The fall came because of this parallel channel of the circulating supply. Okay, this was the first. And market यहाँ पे ऊपर के लिए क्यों गया था? To hunt down the short retailers. So these are the two plan of actions because of the circumstances wasn't built. And ये पूरा movement यहाँ तक drop क्यों हुआ? Market इस circulating supply के साथ rejection लेके क्यों ऊपर के लिए नहीं गई? क्योंकि अगर notice करोगे, we have one more circulating supply at the plan of action, which is this. And where did market tend to take the rejection now? On the completion of proper circulating supply, the market tend to move in the directions, right? So here, what are the first plan of actions that you will be looking at? The first plan of actions that you will be looking here is in the circumstances of the swing high, point 1, एक second guys, okay? The swing low, and this will act as your retracement. Let's check the math where exactly the market is taking the rejection or no. If we have a rejection and continuity, that will be the next step of action. 3008.192. What is the swing that we are having? 3008.192. With that point of action, swing low is 3002.460. What is the retracement point that we are having? 3005.109. What is the formulative number? The formulative number is 5.732. What is the golden ratio number that we are having? The golden ratio number we are having is 3014. Let's check. Do we have the rejection over here? 3014.383. Yes, we do have a rejection. With that rejection perspectives, what is the intermediate ratio? The intermediate ratio over here will act as the current, which is 3016.573. Is my supply and demand working in the structures of my mathematical numbers? Yes, definitely. If there is a break of this current supply and the continuity, then we will look for the next plan of actions, not prior to that. Okay? Any doubts you guys are having in gold? Please do let me know. किसी को भी कोई भी doubt है? Please do ask. Oh, the term is eggshell of that structure. Yes. If there is no doubts, we will move to the next structure, which is BTC. In 4 hours, if the inducement was not there, then we could have considered the previous supply, right? Yes, if there was no inducement in the scenario, sorry, 4 hours. If this inducement wasn't there in the structure,
this box of action, yes, definitely the movement could have been your previous supply. The entire movement could have been continued in the structures. Okay. Clear, Nilesh? किसी को भी कोई भी doubt है, please do ask. Don't hesitate in asking the doubts. Okay, got it. Let's move to BTC. 15 minutes. Starting from daily time frame, hit the like button, guys. Last time I'm asking gold में कोई doubt है आप लोगों को? Doubt नहीं है तो बता देना. We'll move to BTC. Sumit, any doubts? Samarth, any doubts? स्मिता मैम, नहीं नहीं, बने रहो, अभी भी मूवमेंट है बैंक निफ्टी में. क्या रिजेक्शन रिजेक्शन कर रहे हो? रुको ना. There is still the moment. Wait. 52,512 is the next target. Don't hurry bury in the trades. Hold the trades. थर्सडे के दिन मंथली एक्सपायरी है, कल तक होल्ड करो आराम से, टेंशन मत लो. नॉट एज ऑफ नाउ. ग्रेट. ओके. गुड मॉर्निंग यू. हाउ आर यू? 7,850 points running in BTC overall in the swing, and current short rate running with 850 points. Gold 90 pips. Bank Nifty swing trade running with 38x. Execution was taken at 49 12th March, currently running at 1300. Beautiful, you. Keep it up. Okay, let's start with the movements of BTC. In the structures, what are the first steps that we'll be following over here? The POI range markouts. Post the POI range markouts, what are the next steps that we'll be looking? Post the inducement, this allocations will be taken consideration of. Post the allocation points is taken under the consideration. What do we notice over here? We have a buyer's allocation point. Buyer's allocation के point के साथ ये एक mathematical number था जहाँ से market ने rejection ली. With this point of actions, market tend to take the rejection. Right? यहाँ पे internal liquidity point कहाँ पे है? This is your internal liquidity point. With the internal liquidity point, market tend to take the rejections in the demand zone. Right? This scenario में what are the first steps that you will be following here? The first steps that you will be following are executing the movements with the parallels of the supply and demand. Right? So in the scenario of the structure, whatever my previous demand is, this is my previous demand. This will act as the current post the S2 scenario, right? S2 B1 का scenario के बाद exactly rejection from the buyer's allocation point के साथ market continuity. In this scenario, we will consider the wick. Why? Because we have the break in the structure. With the break in the structure, market ने ऊपर के लिए move दिया. With the break and the continuity, double the movement. With the doubling of the movement, what is the current plan of actions that market has showcased here? The market has showcased a rejection, right? So this is the rejections of daily time frame. What are the mathematical numbers that you will be following at the current stage? This as your swing high, this as your swing low, and this as your retracement point. Right, let's do the math of swing trading.
The swing high is at 84,399.34. What is the swing low? 76,517.72. The retracement point is currently at 79,975.43. What is the formulative number? The formulative number that we are getting is currently at 7881.62. With that, the golden ratio is currently at 72,727. So let's mark out the number 92,727.89. Where do we see the rejection perspectives of a daily time frame? The daily time frame perspectives are looked into the consideration of the previous high. And कहाँ पे है हमारा next point of action? 95738.67 as the intermediate ratio. With the intermediate ratio, what do we notice? Is it exactly in the point of actions of the movement of internal liquidity point? Yes, definitely. So what I'll be doing, I'll just mark it up and allocate it through the previous. Right? With that, did the market continue the movement? Let's look in 4 hours. At every point of action, there was a rejection continuity. This was the demand allocation point. With the demand allocation point, there was a retracement with the retracement continuity of the previous. Right? What was the movement allocations looking in the current supply perspectives? The previous supply, which is this, will act as the current movement over here in the BTC 4 hours. This will be your supply, which will be taken under the consideration post the retracement point. What is the setup we are having? S2B1 setup. With S2B1, market tend to move in the direction. We have a break with the break of the continuity. Where is market currently taking rejection from? The market is taking rejection from 150%. Right? This is the first scenario of looking towards the long. इसके साथ what is the second scenario? Market ने एक rejection लिया. Rejection लेके what is the plan of actions that you can look at? The scenario 1. The entire movement was covered with the full retracement point of action? Yes. Scenario 2, only the previous demand range, the two candles of the red, will be considered if you get confused. Right? Allocate the movement with the movement, double the quantity, 150% rejection or 200% rejection. What do we notice? We have a 200% rejections. Market उसी point of action के साथ continuity दिखाई. राइट कितना मूवमेंट अलोकेशन में दिखने को मिलेगी जितना आपका प्रीवियस सप्लाई है यहाँ पे उतने का ही मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा in this scenario this is my plan of actions which will be taken under the considerations थोड़ा ज्यादा लिया क्या yes my bad guys so this will be the plan of action whereas market tend to taking the rejection from the same point of action first rejection point कितना आएगा हमें जितना हमारा point of action में demand generate हुआ है that will be looked under first consideration. At the current scenario, what do we notice? There is a break. With the break of conclusions, what are the next steps that will be following? Allocating the next point of action, right? And where exactly the market is currently tend to be at? The market is tend to be at 150%. Right? With the 150%, what are the next steps that we'll be allocating over here? Let's look for 4 hours numbers. In the scenario, the low remains the same. The swing high will be this. With the swing high, what is the retracement allocations that we'll be looking at? The red candle low. Right? Let's do the math and check how does the numbers work in the scenario at the current stage of actions. 76 swing high is at 82 249 0.13. The swing low is at 76,517.72. The retracement point is at 79,079. What is the formulative number that we guys have got is? The formulative number that we guys have got in the current state of actions is at the scenario of 88,352. 88,352 को mark करता है.
88,352 कल के इवनिंग सेशन में टारगेट हिट हुआ था ये, राइट? आज के दिन में भी वहीं पे है, राइट? Exact target was hit at this point of actions. So this is our 4-hour swing, right? With this point of actions, what are the next steps that we'll be looking over here? The next step is 90,541. That is our next plan of actions, which will be under consideration. Okay. So post this allocation points, what are the next steps that we'll be looking at? Coming down to 1 hour. What is 1 hour saying to you at the current stage? The 1 hour is saying you the movement has been allotted, the price action has been followed. What are you guys missing? Supply 1, with the supply 1 continuity, 150% rejection, right? Do we get 150%? Yes, 150% rejection. With the 150% rejection perspective, continuity of the movement. The first point of action, allocate the entire movement structure with this point of actions, double the quantity. This is your scenario 1. Else, the major scenario will be taken under the consideration of the entire movement with just the body. If we take with just the body, that will be your 100%, right? With this continuity, what is the next plan of actions that we'll be looking over here? जितना हमारा previous supply build है, उतने का movement in the continuity आपको दिखने को मिलेगी, right? Do we have the continuity and the rejection? Yes, we do. Single candle rejection, whatever the previous movement you are having, that will be your current rejection perspectives. Continuity में कितना movement आएगा, जितना आपका previous movement allocation है, उतना ही movement plan of action generate होते हुए दिखेगी. What do we notice? कल के दिन में market exactly इस point of action से rejection लिया था, right? So with that plan of actions, what are the next steps that you will be looking under the considerations? You will be looking under the considerations of the movement towards the short. Short का movement कहाँ तक आएगा? This will be your swing high. This will be your swing low. This will be your retracement point, right? Let's do the math for the short. The swing high is at 88,546.99. What is the swing low? Swing low is at 87,792.12. What is the retracement point? 88,287.13. What is the formulative number? The formulative number is 754.87. With that, let's allocate the moment and check where exactly the markets are tend to look at. 87065.75. Right? This is our plan of action number 1. We had a retracement from the same. Yes, definitely. With this, let's look for the next, which is intermediate ratio and the continuity, which is 86,777.39. Right? Do we have the rejections and the continuity? What are the next steps that you will be looking at? The next steps you will be looking in the considerations of the 15 minutes. In 15 minutes plan of action, जो हमारा swing high था, swing low था, under the considerations, the movement is being moved. Yes, definitely. Sustain हुआ है? Yes, definitely. अगर notice कर रहे हो, market यहाँ पे अभी circulating supply build करने को start किया है. Right? If the market tends to break, because each and every candle has a partner over here, right? With the partner, there is a movement allocations of the executions, right? उसके साथ अभी हमको क्या दिखने को मिलेगी? एक break continuity towards the long, right? कहाँ तक? In the action plan, we will be looking on to the circumstances of the first range, which will be considered as 88 to 87. राइट शॉर्ट की तरफ तभी देखेंगे जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर अलोकेट होगी राइट सो अलोकेशंस ऑफ द प्रीवियस डिमांड देख के चलेंगे तो दिस विल बी डिमांड 1 रिट्रेसमेंट कितना लिया मार्केट ने जितना हमारा प्रीवियस उतना ही मोमेंट ऑफ अलोकेशन हमको यहाँ पे दिखने को मिली
on the continuity we had 150% rejection. 150% rejection के साथ market continued towards the short. राइट यहाँ पे मूवमेंट कितना अलोकेट होगा, जितना हमारा प्रीवियस डिमांड उतने का ही मूवमेंट. राइट एट द सिनेरियो वेयर डू वी नोटिस एग्जैक्टली मार्केट टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ एक्शंस. अगर मूवमेंट आती है तो यहाँ से ही आना चाहिए, वरना ब्रेक करेगा देन आवर मैथमेटिकल नंबर चेंजेस टू द नेक्स्ट. एनी डाउट्स इन BTC? Sir, yesterday Bank Nifty moved 1000 plus points, but Bandhan Bank moved only 3 points. I can feel your pain, Venkat. ब्रेक का वेट है. अगर ब्रेक होता है तो ही सी पंकज at the current stage of actions what is your 4 hours saying, right? 4 hours is saying this is just a small retracement. What is your daily time frame saying? एशियन सेशन में विक क्रिएट करने के लिए आया है वो, right? At the scenario point of actions what are the next step you will be looking at? You will be looking for a break के साथ inducement S2 creation, इस कैंडल के साथ नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूटी 4 आवर्स में, 1 hour में same plan of action on the break of S2 S2B1 or S2B2 continuity, right? So that you will be looking in 15 minutes for the same execution plan of actions. ठीक है? We will not wait for the break. We will look for an execution. Clear, sir? Great, guys. Sir, mathematical numbers डाल दो chat पे. या डालेंगे. Excel open करना पड़ेगा. 2 मिनट रुक दो, डाल दूंगा. Coming down to Indian session, guys. The most waited and beautiful. No change of structures, nothing. Next plan of actions will be taken under the consideration of this swing high. This will be your retracement point. The same will act as your swing low. What are the next targets? The next targets is here. Let's do the math of swing high. Swing high is 23707.05. The swing low is in perspective of 23434.65. The retracement point is at 23. एक सेकेंड गलत है. Yes, 23631.35. Next targets are in the scenarios of 24072.09. Action plan 1, intermediate ratio 24176.16. Action plan 2. ये क्या हुआ? 24176.3. ये निफ्टी का हो गया. एक रिजेक्शन पर्सपेक्टिव दिखने को मिलेगी. कितना रिजेक्शन आएगा हमें इस पॉइंट ऑफ एक्शन में? स्विंग लो स्विंग हाई रिमेन्स द सेम, जस्ट द अप्रिसिएशन गेट्स चेंज. सो एक छोटा सा रिजेक्शन पर्सपेक्टिव किस पॉइंट ऑफ एक्शन का दिखने मिलेगी? 23645.85. swing low will remain the same, 23434. 65, and the retracement point which is looked in the consideration of 23579.80. What is the formulative number? 23921. 23921.52 will be your retracement range, guys. Okay, 23921.52.
छोटा मोटा ऊपर नीचे, that's totally fine. Okay, this is the scenarios what we'll be looking in Nifty, nothing else. मैं ट्रेडिंग भी यूज ही नहीं करता हूँ यार, आप लोगों को सिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ उतना ही. So majorly we look into the circumstances of IG charts, right? उसमें डायरेक्ट नंबर्स में चार्ट पे डाल सकता हूँ. So yes, something new, but definitely yes, learning and implementing this trading view in my life. That's something good which I have done. मेरे को ट्रेडिंग व्यू के बारे में पता चला लास्ट ईयर. ओके, सो बैंक निफ्टी नो चेंजेस बिकॉज हमारा टारगेट अभी भी ऊपर के लिए पेंडिंग है. So post closure of that, we will look for the next change of actions. Okay, not prior to that. Allocations के हिसाब से देख के चलना है. So this is our first supply. First supply के साथ retracement कितना आया movement, जितना हमारा previous demand generation था उतने का allocation यहाँ पे दिखने को मिली. With that continuity of the movement over here, right? With this continuation, market took a rejection. The rejection perspective is as per the previous allocation point. Market tend to break के साथ continuity में कितना movement आएगा, जितना previous allocation उतने का movement plan of action. Okay, this will be look into the consideration of the current. Any doubts in Indian sessions? No screening required in Indian sessions, guys. Right? Screening तभी चाहिए होगा जब हमारा 1 hour का plan of action change होगा, selling pressures generate होगी. अगर selling pressures नहीं आती है, अगर buying pressures नहीं आती है, in the direction में movement है, तभी ही next plan of actions will be taken under the consideration. Market sideways जब जाएगा, then we will look into the next plan of actions, not prior to that. Market sideways जाने के लिए अभी अच्छा खासा 2 हफ्ता है, तो बनाओ पैसा, छापो पैसा. Okay. Good morning, Anjali. Beautiful trade. Keep it up. Anyone has any doubts? Please do ask. Don't hesitate to ask doubts. Doubts पूछोगे तभी सीखोगे. And all the new members, welcome to the stream. जो भी doubt है, पूछिए. If you're learning from the stream and the content, do hit a like, share, and subscribe. Definitely, Nilesh. 2 minute explain करता हूँ. Literally, you knew about trading view 1 year back. Yes, 1 year back ही मेरे को समझ में आया. समझ में आया मतलब पता चला ट्रेडिंग व्यू करके एक है ऐप. बिफोर दैट हाउ यूज्ड टू allocate इंडियन सेशंस. देन चार्ट आईक्यू करके था ना, उसके थ्रू अलोकेशंस देखता था. बिकॉज फोरेक्स के लिए मेरे पास आईजी थी. इंडियन सेशन में जो
बाइफर्केशन पॉइंट में दिखता था, वो चार्ट आईक्यू दिखता था, तो आई वाज फॉलोइंग दैट। देन जब मेरे को पता चला ट्रेडिंग व्यू है, देन आई चेंज द इंटीग्रेशन टू ट्रेडिंग व्यू। सर आप अपने चैनल क्रिप्टो के लिए अलग प्लेलिस्ट बनवा दो कि कौन कौन सी वीडियोस क्रिप्टो के लिए है। डेफिनेटली डन सर। For sure, take this point under the consideration, implement it in 1 hour. सर कोई जेनिफर एडम्स करके मैसेज किया है। भाई वो सब स्पैम है, वर्षा निकालो यार उन लोगों को सब। भाई मिस्टेकली भी मत चले जाना उनके इसमें। सेटअप क्रिएट होने दो, उसके बाद ही नो हरी बरी। सो वेट।
100 points running. Sorry, 1000 points says a row. Good morning, Patel. How are you? Hit the like button, guys. कोई भी डाउट्स है पूछो. लाइक कर दो. Sir, can you please watch Nifty? My GR is coming 33883. Definitely, yeah. 33883. क्या आ रहा है 3? Golden ratio. Okay. So आप इस point of action से लिए थे क्या? This was your swing low, this was your swing high, and this was your retracement point. Then yes, that is the point of action. Perfect. इंट्राडे के लिए परफेक्ट है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं. ओके. स्विंग का समझा दो सर. यस, डेफिनेटली. गिव मी अ मोमेंट. नहीं नहीं, अंबिका, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, नॉट करेंट. ओके.
In the consideration point of actions, Patel, what will be your plan? At the current scenario, आपने इंट्राडे के हिसाब से लिया था, but rejection market में जितना इधर previous plan of action है, उतने का ही movement लिया, right? So next plan of actions, what will be taken under the consideration? Whatever the movement you got in the plan of today, that will act as your current on the continuity of the candle. Okay, this will be the plan of actions what market could tend to create. Definitely इस candle में हमें pressure तो दिखने को मिली है, right? How? I will explain it to you how. Just a second. नहीं नहीं अंजलि, wait. Thank you बोल रहे हो पंकज. At Pankaj, the playlist is being created on the crypto. New videos could be loaded on Thursday. That's not my work. Okay. Guys, एक सेकंड, हल्का सा लैग हुआ है, रिफ्रेश कर लेते हैं. गाइस एक बार क्लिक कर देना, लाइव पे क्लिक करके रिफ्रेश करके प्लेबैक स्पीड को 2 पे रख लेना. इट विल बी बैक इन द एक्शन, right? At the current scenario, Patel, what do you notice? We have a box movement theory, correct? Let's consider this as the bearish moment. With that plan of action, this will act as your green box, which will be taken under the consideration of the bullish moment. Okay? So this is the box 1 and box 2. If I mark out the remedial activity in the structure, right? In this scenario, I will just mug up a bit. With the mug up of the bit, what will we notice? We notice a small structure, right? With the small structure, what is the moment allocation? Moment allocation is shown in the perspective of the curriculum, right? यहाँ पे selling pressure at the point of action दिखने को मिली है. क्या ये selling pressure worth है at the scenario, right? To understand that conspiracy, first we have to understand हर एक retailers के perspective में ये क्या candle बन रही है. This is acting as a bearish engulfing as per each and every retailer. मतलब definitely उस perspective में trap होंगे सब. Trap होने के बाद
कंटिन्यूटी में मूवमेंट आएगी, राइट? वो मूवमेंट जब ट्रैप होके एसेलेंट होगा, द स्पाइक व्हाट यू विल बी गेटिंग, that spike is the continuity of the movement structure, then the plan of action gets reversed, not directly, right? So इस plan of actions में क्या देखना है आपको, कब रिटेलर्स की हंटिंग होगी, उसके बाद कब प्लान ऑफ एक्शन ऑफ S2B1 जनरेट होगा, तभी ही शॉर्ट में देखेंगे, उससे पहले नहीं. ओके, always remember this is currently a trap which has been indicated to the movements of the retailers. सब bearish angle finger के जो बैठे हैं ना, उनको सब उड़ाएगा यहाँ पे अभी. Just wait and watch, right? Then this plan of actions will get created in the circumstances of the inside liquidity of the bearish angle. ठीक है, नीलेश का कोई डाउट था ना? Can you explain with or without quick? Yes, definitely. कहाँ पे? Okay. Give me any date, नीलेश, कोई भी एक डेट दे दो. वो लैग हुआ है, उसके लिए तो बोला रिफ्रेश कर लो एक बार. रिफ्रेश करके प्लेबैक स्पीड को 2 में कर लेना. नीलेश, गिव मी अ डेट. चार्ट स्ट्रक्चर. नहीं यार, एक सेकेंड रुको. यस, 5th March 25. Yes, we'll explain that. अभी भी स्ट्रक है क्या? गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध. Yes, we are back in the actions. Let's start. एक बार रिफ्रेश कर लेना guys. Okay. So what are the next steps that you will be looking? 25th March. Let's go for 5th March. Right? 5th March of allocation के हिसाब से. How will you look under the consideration of the point of action where all you will take under the wick, where all you will not take under the wick, right? फर्स्ट मूवमेंट प्लान में ये विक कंसिडरेशन लेना है कि नहीं लेना है, राइट? यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि वी डोंट हैव अ सस्टेनेबिलिटी, वी हैव ए एक्शेल. ओके, जब एक्शेल बिल्ड होता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई बिल्ड होती है, उस पॉइंट ऑफ एक्शंस में यू कैन लुक फॉर विथ विक. वेयर यू शुड नॉट बी लुकिंग विथ विक is in the scenarios of the reversal. In the scenario of this point of actions, what do we notice? We have a wick, correct? But if we take under the consideration of the wick over here, what will be the plan of actions? The plan of action will not work in the simultaneous way of the previous. मतलब यहाँ पे जो scenario build है, first
हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन कितना होगा, जितना हमारा बॉडी से है. What do we notice over here? This is the point of actions that will be taken under the considerations, right? Why? Because we don't have a structure plan out over here. मतलब जब भी मूवमेंट एक प्लान ऑफ एक्शन में जनरेट होती है विद द विक, जब तक प्रीवियस लो ब्रेक ना हो, स्ट्रक्चरली एक लो ब्रेक होना चाहिए, then you can take the wick consideration. Okay, same scenario, अगर मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है, let the first retracement high break, right? जैसे ही हाई ब्रेक होगा, on that point of action you will consider the wick, right? So this will be considered in only two point of actions. वो कहाँ पे होगी? वो जहाँ पे मार्केट में मूवमेंट स्ट्रक्चर एनालिटिकल वे में ब्रेक करेगा, राइट? दूसरे पॉइंट ऑफ एक्शन में छोटा सर्कुलेटिंग मूवमेंट में है, राइट? उस पॉइंट ऑफ एक्शन पे छोटा रिट्रेसमेंट के साथ मूवमेंट ऊपर के लिए जा रहा है, वहां पे सब आप पूरा विक के साथ ही लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. मेजरली विक कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशंस विल बी लुक्ड एट ओनली रिवर्सल पॉइंट्स. ओके, अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे तरीके से बिल्ड होती है, देन वी वोंट, एल्स वी विल. क्लियर नीलेश? सर ये स्टक हो गया, समझ गया. I will re-explain it. Why is YouTube doing like this? I don't understand. Clear, sir. Okay, जैसे ही stream clear out में आएगा ना, we will explain it to you again. All the new members, if you're learning from the stream, if the content is good, do hit a like, share, and subscribe. Nitesh, in that channel, we have only live, right? कोई बात नहीं है, we'll upload. 1 घंटे में 15 वीडियोस बन जाएंगे यार. सिनेरियो सिंपल है, इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो टाइम तो लगेगा. राइट? आ गया है नीचे. प्रेशर वर्क हो गया. ये स्ट्रीम लैग यूट्यूब साइट से है या आपकी कोई सॉफ्टवेयर पे? यूट्यूब, यूट्यूब हमारा सॉफ्टवेयर जबरदस्त चल रहा है, राइट? विदाउट अ लैग इट्स मूविंग. बिकॉज प्रीव्यूज दिखते हैं ना हमें. सो इफ आई शोकेस यू माय प्रीव्यू, देयर इज नो लैग इन माय प्रीव्यू.
Yes. Now it's working fine, right, guys? Yes, no lag. One second here. Let me showcase you. So this is my preview. Okay. So the preview analysis, we don't have any issues over here, right? There is no lag. So this is just the software which has been currently running through, right? So there is no lag in the run. So यहाँ पे major analytical procedure क्या हुआ है? That is just the YouTube software which is not taking the load of ours. Right? Single laptop में तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ ना, या दो लैपटॉप के साथ तो काम नहीं कर सकता हूँ, या दो स्क्रीन के साथ तो काम नहीं कर सकता, तो आई हैव टू लुक फॉर सम ऑल्टरनेटिव्स. कैसे भी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज. नो वरीज, जहाँ जहाँ पे तुम लोगों को डाउट आता है वहां वहां पे पूछ लीजिए, so that I will help you out with re-understanding and allocating the stuffs, teaching you guys again. जिनको शॉर्ट देखना है देख सकते हैं क्या? इंट्राडे में मन नहीं है आज, थर्सडे के दिन देखेंगे. 30% ऑफ द लुकआउट के लिए देखना है, 10 to 30%, then yes, else no. All the new members, welcome to the stream. जो भी doubt है, please do ask. If you're learning from the stream, do it a like, share and subscribe. Finally break हुआ, रिट्रेस कितना हुआ, जितना प्रीवियस सप्लाई यहाँ पे बिल्ड है उतना ही रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी, ये कैंडल क्लोज 9 मिनट्स में कैंडल क्लोज होता है, देन व्हाट विल बी द प्लान ऑफ एक्शन? जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई यहाँ पे है वो कंटिन्यूटी में अलोकेशन दिखने को मिलेगी. ओके, नॉट प्रायर टू दैट. 30% के लिए ट्रेड करना है? आपकी मर्जी है, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? आपको करना है तो करो, नहीं तो थर्सडे का वेट करो. सर कहावत में ट्विस्ट है. क्या है ट्विस्ट? ये क्या बोल रहे हो यार तुम लोग? स्क्रीन पे बोल नहीं सकता, चुप रहो. गुड मॉर्निंग मली बाबू सर.
सस्टेन होना चाहिए, विदाउट सस्टेनिंग नो। जब सस्टेन होगा तब देखेंगे। विदाउट सस्टेनिंग नो गाइस, क्लियरली बता रहा हूँ। वेट, व्हाई इन सो हरी? इंडियन सेशंस में अगर हरी भरी में ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, डेफिनेटली अकाउंट उड़ाएगा। डीकेस बहुत जल्दी होती है, सो वेट, नो फोमोस।
Good evening, Mr. Abirul. Hit the like button, guys. कोई भी डाउट्स है पूछो, बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग रिले बार में करो, उसके बाद आके लाइव टेस्टिंग करो। लाइव टेस्टिंग होने के बाद we will look for and small account executions. स्मॉल अकाउंट एग्जीक्यूशन के साथ जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, देन जितना भी अकाउंट वैल्यू आप लुक आउट कर सकते हो, उसके साथ रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हुए ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे। One thing keep in mind, fearless trading with a proper risk management, with emotionless trading, जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना, is not the quality of the traders. Just make sure that you carry the poker face when you're in the directions of the market and wait till the mathematical numbers. Sir, will be looking for long in gold. Hi Nitesh, are you replying to private messages as I keep hearing you to wait, but not seeing any messages in live chat? Welcome to the stream, Keshav. There is another session which is going on beside to you too, which is called as LTD. Are we looking for reversal point of actions in BTC? Depends. If the market creates S2 scenario, yes, surely we'll be doing it, Summer. If not, no. With a small risk, taken a short trade in Nifty ID. क्यों करते हो यार? मत करो ना वरुण. It's long time I didn't trade in intraday, so took one. Keshav, do the back testing, do the forward testing. Forward testings will be done through relay bars. Once you get the confidence, then come down to live. In live, do the analysis for 1 month. Post analysis of live trading. Then you will start with the small value to understand and build the confidence with the money that you're putting into the market. Once you gain that confidence, then you can come with the real money of the big values and start deploying with the risk management. Okay? Till then, no trading, just learning. First learn, then remove the L and earn.
Okay. Good morning, Mahesh. In gold, can it create an inducement 3 now? B3. To create inducement B3, the candle should close inside this green candle. The next candle should be in the continuity or inside the same zone. In the current scenario, the market is following the structure break, right? The market is moving through each and every point of actions. So, no current considerations of S1 setup over here. Okay, the market will tend to complete the 50% and the 100% of the second supply. Okay, Mesh. For S3 setup, the candle should close next candle with the rejection continuity. How is your freelancing going on, Mesh? You're doing few assignments, right? How is it going on? So can you explain in brief about all the setups? थोड़ा सा confusing लगने लगा है. Definitely, anything for you guys. Inducement, break, retrace, continue. Inducement, break, rejection, continue. Inducement, fake break, closure, continue. Right? Bearish moments of B1, B2, B3. Setup S1. Right? Now we look for bullish. Inducement, break, retest, continue. Inducement, break, rejection, continue. Break, rejection, continue. Inducement 3. Fake break, candle closure inside it, and continue. Okay, this is the setup of S1. With this, what is the setups of S2 looked in scenarios of rejection, first candle closure, third candle rejection के साथ entry. Right, long की तरफ, short की तरफ, ऊपर से नीचे rejection, second candle closure, third candle rejection के साथ continuity. Right, this is B1, B2, rejection, inside candle, confirmation of 2 or 3 candles in the same inside candle zone, and then continuity. For the long, rejection, inside candle, 2 or 3 candle confirmations, and the break. Right, this is B2. So these are the only setups which market will follow before the movement plan of action. S1 B3 बताना डिटेल में.
वीडियो जाके देखना, मिस्टर अविरल जैन। बताऊंगा यार, थोड़ा देर रुक जाओ, डेफिनेटली आई विल। Is to B2 forming in BTC, that's right. And Mahesh, what do you notice in gold? What did it do? Rejection and continued. So this is the plan of action that you guys should have, right? Till the time there is no closure of the candles, you won't look into a thinking perspective. कभी भी सोच के execute मत करो। मार्केट बताएगा, अगर मार्केट बताएगा तो फॉलो करो, वरना आराम से बैठो डायरेक्शंस में। ओके, 60 points running in Nifty, feeling good. Great. Namaskar, Manan. 3017.57 buy. Okay. What is the session? Asian session. What is the rule? 20 pip rule. 2 points in gold, 200 points in BTC. That will be your plan of actions, which will be taken under the consideration for the moments. तुमने explanation के हिसाब से execute किया है, then yeah, it's good. 40 pips के ऊपर closure आएगा तब CTC पे लेके आओगे, उससे पहले नहीं. London session will start in 2 minutes. Let's look into the structures of the volume. What do we notice over here? Do we have a volume spike? No. So easily. And MTSL नहीं करना, follow करना है, होता है कैसा सर इसमें? जैसे 3x पर 1x पर MTSL रखते, नहीं, एशियन सेशन में अगर मूवमेंट 4x के ऊपर जब जाएगा, तब the followment will be followed through the 4 points, right? 40 pips के ऊपर जब जाएगा तब आपका एशियन सेशन का 20 pips जो है वो 1:1 सिनेरियो में अलोकेशन पे आएगी। आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे है, दिस यहाँ पे। इन दिस पॉइंट ऑफ एक्शन जैसे ही 40 पिप्स के ऊपर क्लोजर देती है, CTC प्लस 10 पिप्स विल बी योर सिस्टम, राइट? सिस्टम ट्रेलिंग। उसके बाद कंटिन्यूटी में जब जाती है 50-60 पिप्स, then MTSL will come under the play, not prior to that. Okay? Follow the simple rule and then trail the movements in the direction, right? In this scenario, your execution was at 3017.57, right? With that closure, what is the movement that you have got? The movement currently is running with 50 pips, right?
once the candle closes in 10 seconds, if the continuity with the rejection comes, then you can look for the next perspectives of the MTSL point of actions. उससे पहले नहीं. Okay. ना BTC में वॉल्यूम है. BTC में आइसबर्ग ऑर्डर बन सकती है. मजेदार आइसबर्ग ऑर्डर आएगा यार. आएगा तो 40 pips plus and close right in 15 minutes. Yes, right. किस किस तरफ का एक्शन के लिए, शॉर्ट की तरफ या लॉन्ग की तरफ पंकज? लॉन्ग. ओके, कूल. जो भी डाउट्स है पूछो. Be in the directions of the market. No FOMO trading. No running candle executions. Follow the rules. Be in the directions of the math. Sir, can you check Nifty once? Sure, यहाँ पे. Thank you for teaching the selling and buying pressures. No worries. सर शॉर्ट ट्रेड में हो? नहीं, मेरा स्विंग खत्म होने तक नेक्स्ट ट्रेड नहीं देखूंगा.
Sir, we will start ID also. Definitely we will do it. Next week से करेंगे. It will be more interesting. But Indian sessions में expect मत करना daily moments. But interesting जरूर रहेगा. We will learn selling pressures, how to look for naked selling and how to look for hedge sellings on the sideways zones in the perspectives of the pressures and the liquidity hunts. Next week करेंगे उसे live पे. What is ID? Intraday. सर प्रीवियस कैंडल्स नहीं देखते हो क्या? देखना क्यों है? क्या प्रीवियस कैंडल्स देख के मार्क किए क्या हमने? नहीं ना. Excuse me guys. नहीं अंबिका, गलत ऐड ऑन कर रहे हो. वेट फॉर द प्लान ऑफ एक्शंस. सर बीटीसी में अभी कुछ नहीं है ना अभी भी. S2 B2 फॉलो कर रहा है एट द करंट स्टेज. मार्केट में आइसबर्ग ऑर्डर्स बनना शुरू हो चुके हैं. जब ब्रेक मिलेगा, रिट्रेस होगा, तब नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन. एक्टिव नहीं हुआ. आइसबर्ग ऑर्डर तो बनने दो, उसके बाद एक्टिविटी देखेंगे. इतना आसान है क्या ट्रेड करना? सीखने के लिए आपको सिर्फ चाहिए 1 से 2 महीना.
Then comes the real game. This is the only real game which market will ask. मार्केट इतना आसान है क्या? डेफिनेटली. पॉइंट वन. पॉइंट टू. पॉइंट थ्री. पॉइंट फोर. पॉइंट फाइव. पॉइंट सिक्स. पॉइंट सेवन. पॉइंट एट. पॉइंट नाइन. पॉइंट टेन. These are the only steps what will market tend to ask you. अगर ये आप लोग कर दिए सीखने के बाद, कोई आपको हराने वाला नहीं होगा. कभी कभी हो जाता है, बिना देख के टाइप करते हैं तो मिस्टेक्स होते हैं. ओके. स्पेलिंग मिस्टेक्स. यस. पार्ट ऑफ द लाइफ. ओके. सो इन दिस सिनेरियो, फर्स्ट, हर एक जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए. कंसिस्टेंसी बना रखने के लिए मार्केट में हर एक टाइम पे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा. सो टुडे यू विल बी हैप्पी, tomorrow you will be sad, day after tomorrow you will be neutral. So without motivation, without sadness, without neutral allocations, आपको बने रहना है मार्केट्स में. थर्ड, patience. Not every trade you execute goes into your direction. स्टार्टिंग पॉइंट्स में बोल रहा हूँ. ओके. वैल्यू फॉर टाइम. इज इट वर्थ? राइट. अगर आप 1 घंटा दे रहे हो ट्रेडिंग के लिए, 1 घंटे में क्या उतना कमा पा रहे हो या उतना सीख पा रहे हो? बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी में वक्त की कीमत जिसको पता है, सिर्फ वही आगे बढ़ के कुछ हासिल कर पाएगा. ओके. हर एक सेकंड का कीमत जिसको पता है ना, सिर्फ उसी के साथ चमत्कार होते हैं.
Sorry, the magic happens with only that person. Sorry for my Hindi. Okay, so make sure every second is counted. Whatever you are doing job, you're doing, following your passion, following your hobby, everything needs dedication, right? Dedication is calculated through your time. Control on your anger, मतलब हर एक point of action में hierarchy नहीं build होती है. Some point of actions the market will tend to hunt you down. Okay, once it hunts down, what are the next steps that you will be looking into the circumstances? It will create anger. So here you need to control on your emotions. इमोशन कंट्रोल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रीड. जैसे ही जीतना शुरू करोगे दिमाग में बोलेगा ओके जहां पे मैं बैठता हूँ मार्केट वहां से ही रिवर्स होता है, सो आई कैन कम अप विथ मोर मनी. जिस दिन ग्रीड दिखाया मार्केट में, कितना भी माहिर इंसान हो, मार्केट वो पैसा आपसे लेके जाएगा. उसके बाद आता है फोमो. यार एक ट्रेड मिस हो गया, अभी और एक ट्रेड भी मिस हो जाएगा अगर नहीं बैठा तो. गलत जगह पे गलत एग्जीक्यूशन, अकाउंट ब्लोन. दिस ऑल कम्स अंडर माइंड गेम्स. नेक्स्ट, वैल्यू फॉर टाइम इज इक्वल टू टाइम. नो, वैल्यू फॉर टाइम इज ऑलवेज इज इक्वल टू मनी. हमेशा याद रखना, अगर आप 1 घंटे दे रहे हो किसी भी चीज में, क्या आगे जाके वो 1 घंटा आपके 1 महीने के बराबर कमा के देगा? This should be your calculation because every second matters, right? Post that the market will allocate या कोई भी चीज मूवमेंट में allocate होती है, उस पॉइंट ऑफ एक्शंस के थ्रू ही आप आगे बढ़ पाओगे, राइट? चलो, कुछ किसी में 1 घंटा दिया, आपको समझ में आया ये तुम्हारे लिए नहीं है, right? So wasting 1 hour is totally fine, but once you understand that that is not for you, wasting more time on that is again a value of time which you are losing through the money. Okay, then calmness. हर एक जीत के बाद, हर एक लॉस के बाद न्यूट्रल रहना. 95% of the people won't be able to do it. Control of the money through the compounding. Money can be made by everyone, but compounding can't be done by everyone. Okay, so here the heart is to understand where and how exactly the movement is in the structures of allocations. Okay, this is the point of interest of 10 points to build your mindset. अगर इसमें से एक भी निकलता है, any one of the thing, या डिसिप्लिन नहीं है, या कंसिस्टेंसी नहीं है, पेशेंस नहीं है, वैल्यू ऑफ टाइम नहीं है, कंट्रोल ऑन एंगर नहीं है, कंट्रोल ऑन ग्रीड नहीं है, कंट्रोल ऑन फोमो नहीं है, वैल्यू ऑफ टाइम टू मनी नहीं है, कामनेस नहीं है, कंट्रोल ऑन मनी थ्रू कॉम्पाउंडिंग नहीं है, यू वोंट, एक भी पॉइंट इस 10 पॉइंट में से नहीं है, यू विल नॉट सफाइज इन द मार्केट, राइट? डेफिनेटली कमाओगे बट कॉम्पाउंड नहीं कर पाओगे, राइट? दिस आर द 10 स्टेप्स. देखने को आसान है, छोटा है, बट फॉलो करने के लिए सबसे मुश्किल. ओके, सो अगर ये 10 स्टेप्स आप फॉलो कर लेते हो, देन द नेक्स्ट थिंग्स will be looked into the circumstances, not prior to that. Okay, hope you get my point.
Hello, sir. Hello, VP. I'm not getting when to buy or when to sell. Once you look into the mathematical concept videos, come to supply and demand. Once you come down to supply and demand, then you come down to liquidity explained, right? In liquidity explained, you will see S1 setup and S2 setups. Understand that setup, right? Once you understand that setup, come into the markets in the charts and identify with the back testing. I think you will be trading in BTC. 2 years of back testing mandate, 1.5 years of relay bar testing mandate, 1 month of live testing mandate. If you complete step 1, step 2, step 3, then live testing, post 1 month, you will come into the markets and you will execute. Definitely, whatever doubts you get in the circumstances of the market, you can ask, okay, to get it rectified. So these are the steps to understand when to buy and when to sell. Okay, baby. Everyone hit the like button, guys. All the new members, जो भी doubt है पूछो. If you're liking the stream, if you're learning from the stream, if you're learning from the stream and the content, do hit a like, share, and subscribe. गोल्ड में ऑल्सो एसएल पे आने वाला है. एसएल पे क्यों आएगा भाई? सीटीसी प्लस 10 पिप्स में तो आउट हो चुका होगा ना. Hi Nitesh, I'm following the video sequence as suggested by you. S1 and S2 are the liquidity playlist as told by you just now, but there are referred in maths and supply and demand playlist as well. Should we simply go ahead and revise all of them again? Yes, mathematical concept, then supply and demand, then liquidity explained S1 and S2. Then the back testing. In that back testing, whatever you get, you ask. Why I'm saying you to watch everything? Because every setup has a supply and demand, right? So mathematical concepts also has the supply and demand in it. With this perspective, the next point of action, you will come to supply and demand, you will have supply and demand in it, right? Post that, you will have screening and liquidity.
With that liquidity, the last step you will look for is S1 and S2 setups, right? Then you will start with the backtesting procedures. Okay, Keshav, is that clear for you? Sorry, I had to step out for a while. No worries. We'll play back the sessions again. Thanks. No worries. BTC का टारगेट क्या है सर? एक बार दोबारा से बता दो. Swing low, swing high, retracement point डाल लेना. Okay, this will be a swing high, this will be a swing low, this will be a retracement. मेरा भी डाउट देख लो. तुम्हारा डाउट है क्या? स्पेलिंग मिस्टेक. स्पेलिंग मिस्टेक डाउट थोड़ी होता है.
क्यों सर 40 पिप्स पर क्लोज ही नहीं हुआ ना? प्लीज चेक दिस डाउट सर, क्लियर दिस वन एज बैक ऑन सीटीसी। 10 पिप्स के साथ चल रहा है ना? Here, with the execution point of interest, what are the major things that you will be following? Right? You will be following the movement plan of actions, correct? So यहाँ पे closure हुआ, कहाँ पे entry हुआ था तेरा? एक second, let me check. 3017.57, right? इस point of action में यहाँ पे execution हुई है 0.57. यहाँ पे execute होने के बाद continuity में market movement गई थी, right? With the market movement, with this point of action to the body closure. राइट सो इस मोमेंट ऑफ एक्शन प्लान में क्या हमारा प्राइस ऑफ एक्शन जो था दैट इज इन पर्सपेक्टिव ऑफ टू द प्रीवियस? यस डेफिनेटली दैट इज इन पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीवियस। मार्केट ने 40 पिप्स के ऊपर क्लोज किया? नहीं किया। सो व्हाट विल यू बी डूइंग? वेट। रिजेक्शन लिया? यस लिया। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी में आता है, एक कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, देन यू विल मूव द एसएल, एल्स नो। ओके, do the swing high. This will be your swing high perspectives. Swing low, swing high, retracement point. Follow this level for the next plan of actions. Stream will be there for next 30 minutes. जो भी doubt है पूछ लेना guys. तो एसएल ट्रेल नहीं करा? हाँ सही तो किया। अभी यहाँ पे डाउट क्या है तुम्हारा, वो तो बताओ। और शायद ब्लैक कॉफी मंगा दो यार। 3 shots of espresso, 30 ml of water, 7 ice cubes and robust Arabica. Yes sir। वही तो पूछ रहा था। आपने कहा ना 10 पिप्स पर निकल जाना था, सो आई गॉट कंफ्यूज्ड। नो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। Pankaj, what are the numbers that you are getting at the current state?
86916. So wait till that number. इंटरमीडिएट रेशियो का नंबर तक आएगा मार्केट एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन पंकज, उसके साथ फिर से एक रिट्रेसमेंट लेगा, देन कंटिन्यूटी. ओके पंकज. डन. क्या ट्यूसडे है ना, थोड़ा स्लो मूवमेंट रहेगा 7 बजे तक. अविरल है क्या स्ट्रीम पे? कल कितने पॉइंट्स में क्लोज किया शॉर्ट रेट? 200 पिप्स, 250 पिप्स, 150 पिप्स. अगर है तो बता दो.
सर मजाक मजाक में उसने 10 पिप्स पे क्लोज कर दिया। वो बंदा है का अविरल। सर वो ट्रेड तो सीटीसी पर ही निकाल गया था ना। गलत ट्रेड करा था। मैंने लिया था। हाँ ओके मैंने। तुमने लिए थे? अविरल ने नहीं लिया था, अविरल ने भी लिया था। उसका एक्सप्लेनेशन सही था वो। राइट। क्या एक्सप्लेनेशन था? सर 35 चल रहा है, मैं एमटीएस लेके चल रहा हूँ। मैंने लिया था। ओके सर, गॉट इट। उसका नहीं पता। 100 पॉइंट्स इन निफ्टी। गुड जॉब गाइस। नीलेश, बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग में कुछ डाउट आ रहा है? प्लीज डू आस्क। ब्यूटीफुल अंबिका। नेक्स्ट टेबल अब 23,434। Only on one scenario after this. Okay. नहीं नहीं स्मिता मैम, आप लॉन्ग की तरफ बने रहो। All the swing members, you, Smita ma'am, Arundhati ma'am, Harshit, Faiza, Varun, सब लॉन्ग की तरफ बने रहो। आईडी वालों को शॉर्ट है, रिट्रेस हो रही है। अगर 3 o'clock के कैंडल विक प्रेशर के साथ बिल्ड होती है, देन ओनली वी विल एग्जिट, एल्स नो। सर आपने जो 10 पॉइंट्स बताया था, मेरा 10 के 10 पॉइंट्स हिले हुए हैं। वन
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 के 10 पॉइंट्स हिले हुए हैं. नाइस. तो फोकस करो. हिट द लाइक बटन गाइस. ऑल द न्यू मेंबर्स, कोई भी डाउट आ रहा है पूछो. If you're learning the stream, if you're enjoying the content, do hit a like, share, and subscribe. Still doing back testing only, no forward testing yet. Back testing is going slow though. Okay. नितेश, बोलना बंद करो और चार्ट पे लिख दो टारगेट. मैं वो नहीं लिखने वाला हूँ. जिनको सीखना है वो सब्सक्राइब करेंगे, वो आएंगे, वो सीखेंगे. Yes, I noticed that in your videos also in the last you say to like, share, and subscribe. Yes. There should be no distractions in between while you learn. Always remember. इन लोगों को सीखना नहीं है. I'm saying you now, they want trades. वो हरगिज इस चैनल में नहीं होगा. So subscribers बढ़ने से रहे. कोई बात नहीं है. ट्रेडिंग सीक्रेट का 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होगा और वो सब सीखने वालों से ही होगा. ये गारंटी भी मैं दूंगा. ऐसे यू गेव द लॉन्ग ट्रेड इन बीटीसी yesterday. मैंने कुछ बोला ही नहीं था लॉन्ग लो करके. वहां पे सिर्फ ब्लू एरो मार्क लगाया था ऊपर के तरफ. वो इंडिकेशन होता है क्या लॉन्ग के तरफ लो करके? And thank you everyone guys for the support
and the interest that you have shown in learning in the markets. Thank you very much. सर, मैंने निफ्टी में टारगेट्स का वेट किया टुडे। सर, मैंने निफ्टी में टारगेट्स का वेट किया प्रॉपर, ट्रेलिंग हिट हुआ। ट्रेलिंग कहाँ पे लिए थे? उसके लिए फर्स्ट एट द मनी में लिए या इन द मनी में लिए, वो बताओ। सर, ये क्या मजाक चल रहा है? एसएल हिट होने हैं। सर, ये क्या मजाक चल रहा है? एसएल हिट होना है तो हो जाए। जस्ट एसएल पर आता है, वहां से ऊपर और सीटीसी या नहीं पार रहा है। भाई तुम ना क्रेजी। नो रिग्रेट्स, as I'm learning to be in the trades for the targets. Great. एम एटीएम सॉरी एट द मनी में थे या इन द मनी में थे, वो बता देना। Sir, now gold is coming down. Which demand in 15 minutes should I allocate? Just checking to confirm what I did. First allocation point. What is the structure that we have got over here? As per the structure, the first lineup will be this. Okay. So this will be your first line of conduct which you will be selecting. One with the 150%. Okay. So with 150%, the movement. Right? What is the second thing? Second scenario that you will be having over here. The second scenario you will be looking in perspective of your previous, which is the entire movement. Right? These are the two consecutive things that you will be following at the scenario. Okay? These are the two steps that you will be looking at the current. In the money था, ATM हो गया था 175 to 260. Okay. No, sir. Thank you for showing us the right path and correcting our mindsets. Till now, we were just wondering, clueless. Thank you for the kind words, Nilesh. Right? Okay, Mahesh. So this will be the plan of actions which will be taken under the considerations. At the money, ATM हो गया था. Okay. ट्रेलिंग कहाँ पे किए थे?
सर मेरा कुछ कह रहे थे। हाँ, तुम्हारे साथ ही होता है वो सब करके बोला। ना एसएल लेता है ना सीटीसी के ऊपर क्लोज होता है। ओके, गॉट इट। आई टुक द एंटायर डिमांड। नो, दैट इज रॉन्ग। ओके, वन सेकेंड। सो इन दिस सिनेरियो एट द मनी हो गया, तो इन द मनी का पटेल फॉर यू दिस वन इज हाउ डू यू लुक इन द स्ट्रक्चर। सो मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे ब्रेक थ्रू दिया था। ओके, so when the market tend to continue, what is the first steps that you will be looking? First steps you will be in the system trailing will be at just 5 to 10%, not more than that, right? Post 5 to 10% in green you will keep. Post that you will continue with MTSL points. इंडियन सेशन में हमेशा याद रखना MTSL पॉइंट्स लेके चलो, डायरेक्ट सिस्टम ट्रेलिंग करोगे तो ट्रेलिंग हिट होगा, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शंस में हमेशा ईच एंड एवरी स्पेक्ट्रम्स विल बी लुक्ड अंडर द कंसिडरेशन ऑफ रीअलोकेशन पॉइंट्स। मतलब जब भी मूवमेंट एक डायरेक्शन पकड़ती है, राइट, समझो आपने सेकंड कैंडल नहीं थर्ड कैंडल में एग्जीक्यूशन दे, राइट, यहाँ पे 50 पॉइंट्स की एसएल रेंज थी। विद द 50 पॉइंट्स ऑफ एसएल रेंज, फर्स्ट यू वेट फॉर 50 पॉइंट्स ब्रेक, 50 पॉइंट्स ब्रेक एंड कंटिन्यूटी। यहाँ पे आप ट्रेल करके रखोगे एट 5% और 10% ऑफ योर एंटायर एसएल रेंज। 50% मतलब 10 पॉइंट्स के मूवमेंट में ग्रीन एग्जीक्यूशन होगा, राइट? सो यहाँ पे सिस्टम ट्रेलिंग होगी एंड कंटिन्यूटी में मूवमेंट जब आती है तब आप फॉलो करोगे एमटीएसएल पॉइंट्स। ओके, सिस्टम ट्रेलिंग नहीं, सिस्टम ट्रेलिंग इधर हो चुकी है, राइट? उसके बाद आपको करना है एमटीएसएल, राइट? जहां जहां पे एमटीएसएल पॉइंट्स दिखता है वहां वहां तक, जैसे ही उस पॉइंट ऑफ एक्शन का ब्रेक होती है एंड सस्टेन होता है एमटीएसएल के ऊपर, देन एग्जिट, एल्स कंटिन्यूटी। ओके, दिस आर द मेजर थिंग्स इन इंडियन सेशंस यू गाइस हैव टू फॉलो। ठीक है, फिर एग्जॉस्ट कर देता है, फिर मैं लंबा एसएल दे देता हूँ, नथिंग न्यू इन इट। अब तो आदत हो गई है, उस आदत को चेंज करो करके बोल रहा हूँ। ठीक है, सो होप यू गॉट द पॉइंट, पटेल। लेकिन ट्रेलिंग भी प्रॉफिट में ही होना चाहिए। ट्रेलिंग प्रॉफिट में कब होगा पटेल? राइट, एशियन सेशन में आपने कितना एसएल दिया? जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेट मी ड्रॉ एंड शोकेस यू, सॉरी पंकज। सो यहाँ पे आप समझो लॉन्ग की तरफ एग्जीक्यूट किए, करेक्ट, ट्रेड को। यहाँ पे आपने कितना पॉइंट ऑफ एसएल लेके चला? एशियन सेशन में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में आपने 200 पॉइंट्स की एसएल रखी थी, करेक्ट? सो 200 पॉइंट्स होने के बाद मार्केट यहाँ पे 300 पॉइंट्स ब्रेक के साथ कंटिन्यूटी किया, राइट? इन दिस कंटिन्यूटी सिस्टम ट्रेलिंग होता है, ये सिर्फ करंट मूवमेंट्स के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है पंकज। ये जो आईडी में ट्रेड करते हैं, राइट, 15 मिनट्स टू 1 आवर अलोकेशन में ट्रेड करते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए, राइट? 200 के ऊपर पॉइंट सस्टेन हुआ, कंटिन्यूटी आई, 300 400 कंटिन्यूड। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एसएल पर्सपेक्टिव है वो आके यहाँ पे 100 पॉइंट्स में लगेगा, राइट? उसके बाद जो भी मूवमेंट आएगा आप एमटीएसएल फॉलो करके चलोगे। एमटीएसएल विल बी डन ओनली इन द माइंड, राइट? जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन आता है देन ब्रेक। अगर ये ब्रेक होती है पॉइंट ऑफ एक्शन पे, ब्रेक, क्लोज, कंटिन्यू, देन एग्जिट। ओके, यस डेफिनेटली, जब 1000 पॉइंट्स के ऊपर चलेगा योर सिस्टम ट्रेलिंग विल आल्सो मूव। जैसे जैसे एमटीएसएल ऊपर मूव होता है 200 पॉइंट,
MTSL आपका 50 पॉइंट मूव होना चाहिए, सॉरी TSL आपका 50 पॉइंट। अगर MTSL 400 पॉइंट मूव होता है, then TSL will move by 100 points, right? That is the circumstances for Forex and crypto. But Indian sessions is totally different, because in this point of actions, the premium gets decayed in the money, at the money, always in percentage. Whatever you have deployed on the deployment, whatever the movement you are getting, that will be the action plan that you will look for. मैं 1500 पॉइंट्स पर ट्रेल कर दिया करता हूँ। हाँ, 1500 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेल वैसे थोड़ी होता है। समझो, अगर 1500 पॉइंट्स में तुमने ट्रेल किया है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे मार्केट नीचे आ गया, राइट, 1300 पे आके कंटिन्यूटी पे गई है मार्केट, तो यहाँ पे आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो ऑलवेज go with the flow of the markets, not against the flow with the markets. Got it? Hit the like button, guys. सर, निफ्टी में किस कॉन्फिडेंस में आप लॉन्ग के तरफ बैठे हो सर? मार्केट पूरा रेड हो गया आज के दिन में, रुके रहो तो पूरा ग्रीन भी होगा। Noted, sir. Great. All the new members, welcome to the stream. If you're learning, if you're enjoying the content, do hit a like, share, and subscribe. नेक्स्ट टारगेट क्या है सर सब्सक्रिप्शन का? 10,000। कौन से ट्रेड में हो सर? आज के दिन में लॉन्ग के तरफ एक ही ट्रेड चल रही है, लाइव स्ट्रीम पे जो एग्जीक्यूट हुआ था वो है BTC। गोल्ड में हाई वैल्यू डिप्लॉय करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ट्यूसडे है, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्टिंग तक वॉल्यूम नहीं आएगा। स्विंग ट्रेडिंग में कौन सा चल रहा है? गोल्ड चल रही है स्विंग ट्रेडिंग में, BTC चल रहा है स्विंग ट्रेडिंग में, इंडियन सेशंस में बैंक निफ्टी चल रही है स्विंग ट्रेडिंग में, जो कि क्लोज होगा थर्सडे के दिन। Sir, your voice is back.
No blabberings. Yes, I know. No more blabberings. The craziest part जो डॉक्टर ने मेरे को बोला था ना, you should have patience, Nitish. You can't get it rectified in just 1 or 2 days. इतना हंसी आई थी ना मेरे को उस दिन. Thank you for the coffee version. Good morning, sir. Good morning, lunch. How are you? How is your back testing going on? How is your forward testing going on? How is your college? Hit the like button, guys. TP1 हिट हो चुकी है BTC में. Sir, can you show Nifty chart? Yes. Good, sir. Just अभी lunch break मिला था. Great. How is your hackathon practice going on? Punch. Sir, I have made a checklist for retracement points. Could I share it with you? Okay. Sir, I have sent. Okay, Varsha, वो कुछ भेजा है, भेजो ना वापस. Forward it to me. Any inducement created, demand is marked A. If started from the inducement, then rejection till the inducement range. Any non-inducement created D and S will take the retracement till the service previous S and D, opposite of the current. For example, if finding retracement in demand, then some previous supply and demand will be considered. If inducement, then previous supply will be considered. If there is a rejection in the market, then consider the previous bigger supply and demand than the intermediate one.
Ask if the MC2 will be considered in every time frame. Yes, MC2 will be considered in every time frame depending on what are the action plans that you work. Right? If you're working on the swing trading, 4 hours and daily. If you're working on intraday, 1 hour and 15 minutes. Second, if there is a rejection in the market, then consider the previous bigger supply and demand than the immediate one. No, that is wrong. So what happens whenever there is a movement? First, you have to consider the previous. Post completion of the previous, you have to wait. If the market breaks, then you will multiply 150% to 200%. Else, then you will take the immediate action plan. Okay? So good work, definitely. आप लोगों को पीडीएफ चाहिए क्या नोट्स के ऊपर? You guys need a PDF? Let's do the poll. वर्षा poll डाल दो. If I get 100 plus, we will release the PDF tomorrow. Okay, chalo, 50 plus.
Sir, voice is off. And if closed, let us say around 30, 40 or 50 pips down, then I have to give the SL of 30, 40 or 50 pips. The market didn't move in the direction. What scenario is it working in the current state? The market is in London scenario, correct? London session में SL point क्या रहता है? 40 pips का. So continuity, because the market didn't continuity in the flow, the structures remains the same, SL gets increased. Okay? So एक ही चीज याद रखना, fearless trading is very much important in the markets, following the risk management. उसके साथ emotionless trading, जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Make sure you carry the poker face till the time the targets are hit. With that action plan, what are the next steps that you will be looking over here? No FOMO trades, no running candles entry. मिलते हैं शाम पे in the crypto sessions. तब तक के लिए नितेश signing off.